Hello friends, welcome back to our daily MCQ series. So now let's move to our first question, which is, which of the following statements is incorrect about the Army Education Corps? It is a program run by the Indian Army that develops soldiers and officers of all ranks in a variety of disciplines. Since its inception in 1921, it is providing education in non-combat operations only. The facilities of AEC are located in Manesar, Gurugram. So first statement is, it is a program run by Indian Army that develops soldiers and officers of all ranks in variety of disciplines. It is correct. Second is, since its inception is 1921, yes, it is providing education in non-combat operations only. No, it is to combat and non-combat both. So it is wrong. The facilities of AEC are located in Manesar, Gurugram. No, it is at Panchmadi, Madhya Pradesh. So it is also incorrect. We have to answer incorrect. So answer will be 2 and 3. That is B. So move to the next question, which is, which of the following statements is correct about H10N3 strain of bird flu? China has reported a first confirmed case of the human infection in 10 people with this rare strain of bird flu. World Health Organization has confirmed that there is no indication of human-to-human transmission yet. Mammals are otherwise immune against avian influenza. So China has reported the first confirmed case of only in 1 people. So it is also wrong. World Health Organization confirmed that there is no indication. Yes. Mammals are otherwise immune against avian influenza. So this is also correct. So answer will be C. Let's move to the next question. Which of the following statements is correct about the SETAT scheme? It aims to provide a sustainable alternative towards affordable transportation by efficiently utilizing municipal solid waste management. Under the scheme, the use of compressed biogas is promoted to serve as an alternative renewable automotive fuel. The scheme was launched by Union Ministry of Agriculture and Farmers Welfare in 2018. So the first statement, it aims to provide a suitable alternative. Yes, this is correct. It is provide towards the municipal solid waste management. Under the scheme, the use of compressed biogas is promoted. Yes. Third is, the scheme was launched by Union Ministry. No, it is by Union Ministry of Petroleum. So this is wrong. So answer will be A and 2 only. So let's move to the next question. Recently, the term red tourism was in news. It is related to medical tourism, flesh trade in Southeast Asia, illegal immigration in the USA, or none of the above. So its answer will be none of the above, because it is about the visiting the China's historical monuments about the CCP, formation of CCP, China Communist Party. So the fifth question is, which of the following statement is correct about biogas? It is produced naturally through a process of aerobic decomposition from waste biomass sources like agriculture, residue, cattle dung, sugarcane, pest mud, municipal solid waste, sewage treatment, plant waste, etc. It is compressed to form compressed biogas, which holds a potential to replace CNG in automotive, industrial, and commercial use. So the first statement is saying by aerobic decomposition. It is by anaerobic. So this is wrong. Second is true. Compressed biogas can be a alternative to CNG. So the answer is B. Now let's move to Hindi MCQs. किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 साल की उम्र में 3 जून 2021 को निधन हो गया? मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल या भूटान? तो इसका आंसर आएगा आपका मॉरिशस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी अंतरिक्ष
अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने घोषणा की है कि वे किस ग्रह के लिए वर्ष 2008 से 2030 के बीच 2 अभियान भेजेगा? शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, शनि ग्रह, बुध ग्रह। तो इसका आंसर आएगा आपका बुध ग्रह, वीनस। ठीक है, तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन नीति आयोग के एसडीजी भारत सूचकांक 2020-21 में निम्न में से किस राज्य ने अपने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? बिहार, पंजाब, झारखंड या केरल? तो इसका आंसर आएगा आपका केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असम साहित्य सभा के किस पूर्व अध्यक्ष और प्रख्यात साहित्यकार का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? राहुल सचदेवा, अनिल बोरा, लक्ष्मीनंदन बोरा या मोहन अग्रवाल? तो इसका आंसर आएगा आपका लक्ष्मीनंदन बोरा, सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोर्ब्स की तरफ से जारी ताजा रैंकिंग में सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की सूची में किस एकमात्र भारतीय खिलाड़ी को 197 करोड़ रुपए की कमाई के साथ 59वां नंबर प्राप्त हुआ है? रोहित शर्मा, शिखर धवन, ऋषभ पंत या विराट कोहली? तो इसका तो सभी को पता होगा, इसका आंसर है विराट कोहली, डी। ठीक है, अब बारी आती है हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो पिछली बार मैंने क्वेश्चन पूछा था, बट कहाँ से जो सन ऑफ सोइल थ्योरी आपकी जनरेट हुई थी, कहाँ से आपकी सन ऑफ सोइल थ्योरी आई थी? तो उसका आंसर आपका महाराष्ट्र। वहां पे महाराष्ट्र सन ऑफ सोइल थ्योरी क्या होता है कि हमारे जो रिसोर्सेज, हमारे राज्य के जो रिसोर्सेज है वो यूज करेंगे। ठीक है, वो हम यूज होंगे, सबसे पहले हमारे लिए वो यूज होने चाहिए और इसके अलावा। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज द अप्रोक्स टेम्परेचर एट द कोर ऑफ द सन? सूरज के मध्य में उसका अप्रोक्स टेम्परेचर कितना होता है? प्लीज इसको कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।